हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब्स विद एग्जांपल्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ब। ए वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। एग्जांपल्स लाइक, ईट, वाज, वेयर, स्लीप, वॉच्ड, लव, वॉक, सी, टॉक्ड, रन, स्मेल। Types of verbs: action verbs, stative verbs, dynamic verbs, linking verbs, regular and irregular verbs, finite and non-finite verbs, modal verbs, helping verbs। So ये कुछ टाइप्स है वर्ब के। अब देखिए फ्रेंड्स, वर्ब जो है एक बहुत ही ह्यूज टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, साथ में एग्जाम्पल शेयर करूंगा और एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी टॉपिक कवर करने के बाद मैं वर्ब्स के अलग अलग वीडियो लेके आऊंगा इन डिटेल्स। जैसे देखिए रेगुलर वर्ब, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इनमें बहुत सारी डिटेल्स है जो मैं आपको एक एक टॉपिक के अलग अलग वीडियोस में लेके आऊंगा। तो आज बस ओवरव्यू मिलेगा आपको और साथ में एग्जाम्पल्स में शेयर करूंगा। एक्शन वर्ब्स। The verb describes the action the subject is doing. एक्शन वर्ब में आपको सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है वो आपको डिस्क्राइब करेगा। इसमें आपके दो टाइप के हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, an action verb that has a definite object that is being acted upon। इसमें आपके सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए एग्जांपल, नेहा इज ड्राइंग ऑन द बोर्ड। तो नेहा एक सब्जेक्ट है, ड्राइंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है, बोर्ड। इंट्रांजिटिव वर्ब, एन एक्शन वर्ब दैट हैज नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसमें आपके सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नेहा इज ड्राइंग। स्टेटिव वर्ब्स। A stative verb is a verb that is used to express a state, condition or static quality and does not describe an action। So इस टाइप के वर्ब में आपको कोई एक्शन डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा, इसमें आपके स्टेट, कंडीशन या कोई स्टैटिक क्वालिटी के बारे में आपको एक्सप्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल्स एग्री, डाउट, नो, थिंक, लाइक, लव, प्रेफर, want, appear, hear, look, see। से कुछ एग्जांपल्स है स्टेटिव वर्ब्स के। एग्जांपल, he prefers to eat a mango। से वर्ब है prefers। I do not feel very good। यहाँ पे वर्ब है feel। Dynamic verbs। A dynamic verb is a verb that describes an action rather than a state। These verbs describe an actual action carried out by the subject। So इस टाइप के वर्ब में आपको एक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है rather than state। आपको एक्चुअल एक्शन जो सब्जेक्ट कर रहा है उसके बारे में बताता है। एग्जाम्पल्स ईट, गो, रन, स्लीप, स्विम, ड्रिंक, वॉक, टॉक, लर्न, रीड, राइट, ग्रो। सो कुछ एग्जाम्पल है डायनामिक वर्ब्स का। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो वर्ब है प्लेइंग। ही रैन टू कैच द बस। यहाँ पे वर्ब है रैन। लिंकिंग वर्ब्स। A linking verb links the subject in a sentence to the other parts of the sentence so that it becomes meaningful। तो लिंकिंग वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट को लिंक करता है सेंटेंस के अदर पार्ट्स के साथ। एग्जांपल्स इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, सीम, बिकम, फील, टेस्ट, लुक, स्मेल। एग्जांपल, रुद्रा इज माई ब्रदर। सब रुद्रा एक सब्जेक्ट है, माई ब्रदर अदर पार्ट से सेंटेंस का और इज इसको कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो रुद्रा इज माई ब्रदर, सभी लिंकिंग वर्ब है इज।
You were late yesterday. You यहाँ पे सब्जेक्ट है, late yesterday आपका अदर पार्ट से सेंटेंस का, और were यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है. Regular verb. A verb that forms their past participle by adding a d or ed is a regular verb. तो एक वर्ब क्या करता है, अपने पास्ट पार्टिसिपल को फॉर्म करता है बाय एडिंग लास्ट में डी या ईडी लगा के. जैसा देखिए नीचे एग्जांपल है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड. डाई, डाइड, डाइड. इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड. जंप, जंप्ड, जंप्ड. पैक, पैक्ड, पैक्ड. तो पास्ट पार्टिसिपल में देखिए आइदर डी होगा या ईडी होगा. सो इसे कहते हैं रेगुलर वर्ब. एग्जांपल, आई वॉच्ड ए ग्रेट मूवी लास्ट नाइट. तो वर्ब है वॉच्ड. शी टॉक्ड टू हर फ्रेंड ऑन द फोन. सो वर्ब है टॉक्ड. irregular verb. Irregular verb don't follow a rule. जैसे देखिए नीचे एग्जांपल, do, did, done. know, knew, known. pay, paid, paid. fall, fell, fallen. break, broke, broken. सभी पास्ट पार्टिसिपल को देखिए, यहाँ पे जो एंड हो रहा है ये सिमिलर नहीं है. प्रीवियसली रेगुलर वर्ब में क्या था, आइदर डी या ईडी से एंड होगा. लेकिन पास्ट पार्टिसिपल देखिए यहाँ पे इरेगुलर वर्ब का अलग अलग एंडिंग हो रहा है. तो ये कोई रूल फॉलो नहीं करते. फाइनाइट वर्ब्स. A finite verb is the main verb in a sentence that changes its form when we change the tense, person or number. Example, he reads book. So verb है reads. He laughed at a joke. Verb है laughed. Lata reached home after 7 p.m. यहाँ पे verb है reached. Infinite verbs. An infinite verbs in a sentence doesn't change based on tense, person or number. It includes infinitives, gerunds and participles. It provides more information about the main verb. Infinitives consists of 2 plus verb. Example, I want to play football. The verb है play और वर्ब के पहले हमने लगाया टू. आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल. 2 प्लस वर्ब है तो टू प्ले. Gerund. It's act like a noun and can serve as a subject or object in a sentence. They end with ing. Gerund नाउन की तरह एक्ट करता है और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी को भी सर्व कर सकता है. दैट मींस सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. उसका एंड ing से होता है. Singing is my hobby. So singing है verb. Participle. It is a form of a verb used in a sentence to modify the noun, noun phrases, verb or verb phrases. Example, the boy waiting outside is my friend. Modal verbs. Modal verbs are used along with main verbs to express ability, possibility, probability, permission and obligation. Examples, can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to. Example, can you return my books? Verb है can. We must attend his marriage. ये verb है must. Helping verbs. इसे हम auxiliary verbs भी कहते हैं. Auxiliary verbs help the main verb. These verbs provide more information and help us to identify the tense of when the action occurred. Examples, is, am, are, was, were, be, been, has, had, have, do, did, will, shall, should, would, might, being. So ये कुछ examples है helping verbs के.
एग्जाम्पल, मोहन इज मूविंग टू ए न्यू हाउस। सो अभी मेन वर्ब है मूविंग, उसको हेल्प कर रहा है इज से। सो इज मूविंग यहाँ पे वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है इज एंड मेन वर्ब है मूविंग। दे वर प्लेइंग इन द पार्क। सो वेयर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है यहाँ पे प्लेइंग। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब विथ एग्जांपल्स। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद से प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं देन प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।